So good morning children, this is for class 9th. Today our chapter in the kingdom of fool. In the kingdom of fools. In the kingdom of fools. This is what in the kingdom of fools, that is a मूर्ख का राज्य में है. Kingdom means empire. What? A reign of the king, that is what put by written by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan, it is not that mathematician Ramanujan. It is A.K. Ramanujan, Aptipat Krishnaswamy Ramanujan, Kannada writer. Kannada, original mother tongue, Kannada. I think this is the language of Karnataka. Good. So Kannada language from Karnataka is the Indian English writer, and in the kingdom of fool. This is a really ironical story about the rules and reign of kings. This is a kingdom where king and ministers are fool. What happened? They thought one day to change the rules of their kingdom, and it will not be run like other kingdoms. So what they decided, that all the work should be done during the night, and throughout the day they will sleep. रात भर काम चलेंगे और दिन में सोएंगे. What happened? So as usual, even a rat did not rattle during the day. Only at the setting of sun, all Yuva can start their work during the night. So what happened? One day Guru and his disciple means शिष्य उस किंगडम में आए. दिन के टाइम डे लाइट में आके देखा कि सब कुछ साइलेंट है. थ्रू आउट डे उन लोग घूमते रहा अजब तरीका का फीलिंग्स आया. बट एट द इवनिंग जो सन सेट होते तुरंत पूरा सिटीज, पूरा शहर, पूरा किंगडम जग गए. And what happened? They started their working, cultivation, everything during the night. So what happened? They felt hungry, so they went to buy some fruits. And what a strange things is that whatever they buy, it cost only 1 dudu. The currency of that kingdom is dudu. One currency is a dudu. One currency, whatever it is cost. And it is really amazing to the disciple. शिष्य को बहुत amazing लगा, अच्छा लगा. तो वो सोचा यहीं पर रह जाएंगे. And but Guru found that it is really risky for them to stay here, because it is the kingdom of fool, and what will happen to you next is not known to you. Whatever may be happen, कुछ भी हो सकता है इस किंगडम में, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, गुरु सोचा. बट डिसाइपल अमेज्ड बाय द सिचुएशन and want to do 1 rupees currency for everything, and that is what really to take food whatever you want within 1 rupees, and that's why he decided to stay. So Guru told that whatever you decided you do, I am leaving, and Guru left the kingdom. What happened next? One day in the kingdom, what happened? A thief. Now listen the sequence of the story. Up to here, Guru and his disciple who entered the kingdom of fool, and decided the disciple to be there for that what delicious food with 1 rupees, and that's why he wanted to listen for that food, only reason. And but Guru found that it is a place of fools, and it might happen whatever next, he did not know. So what happened? One night a thief, burglar, but burgle in a house, एक घर के, तो हाउस ओनर के घर में, हाउस ओनर के घर में घुसे सामान चोरी करने के लिए डे में, बिकॉज नाइट में सब जगह रहते हैं, तो ये डे का इंसिडेंट ऑब्वियसली. What happened? Thief entered, and when he was taking out the good things from house, on the way the wall fell on him. ये wall इसका ऊपर गिर गया, दीवार गिर गया, और ये चोर मर गया. तो नेक्स्ट डे इसके ब्रदर, thief के ब्रदर किंग के पास जाके कंप्लेन किया
किंग के पास कंप्लेन किया कि एक हाउस ओनर का उसका घर में गया था, एंड दैट्स वाई लिसन, एज इट इज ए किंगडम ऑफ फूल, एज इट इज बट एवरीथिंग स्टेज बट स्ट्रेंज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन किंगडम और रूल्स. व्हाट हैपेंड, किंग समन्ड द हाउस ओनर, उसको बुलाया कोर्ट में और बोला हाँ ही इज गिल्टी, हियर thief is not the guilty, he is the offender. Offender, who is the offender? The house owner is offender. Offender, अपराधी. कौन क्रिमिनल यहाँ पर कौन हुआ? हाउस ओनर, क्योंकि वो खराब दीवार बनाया था, वाल उसका खराब था, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए, फांसी में झूला जाए, ये ऑर्डर दिया किंग. तो ये रोते रोते आए, आके बोले दिस इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज द ब्रिकलेयर्स हु डिड द वॉल लाइक दैट, सो इट इज द फॉल्ट ऑफ ब्रिकलेयर. सो हाउस ओनर, इसको हाउस ओनर लिख्स इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी. हाउस ओनर is told that this is the fault of bricklayer, जो घर बनाया, राजमिस्त्री, bricklayer, he is a person who did the wrong things, and that's why he is the guilty, and you must punish this bricklayer. So bricklayer comes and complain that it is not my fault, it is a dancing girl, dancing woman, dancing lady or dancing girl who diverted his attention. ये dancing girl इसका attention divert किया था while he was doing that wall. She was moving here from there repeatedly, and that's why his attention diverted. उसका attention चले गए थे उस गर्ल, dancing girl के लिए, क्योंकि वो anklet jingling, पायल छमका रहा था, and that's why उसका attention move हो गया, and that's why it is the guilty of dancing girl. And she was a now old woman. She called summoned by the king to the court. She told that it is not my fault, but the jewelry who make me a goldsmith. Sorry, she ordered a goldsmith to build a jewelry. Goldsmith, it is the fault of goldsmith who make her move there repeatedly. ये गोल्डस्मिथ, क्योंकि वो ऑर्डर दिया था गोल्डस्मिथ को एक ज्वेलरी के लिए, और वो ज्वेलरी वो बनाने एक्सक्यूज शो करके लेट कर रहा था, एंड दैट्स व्हाई उसको रिपीटेडली आना जाना करना बोला. तो ये गोल्डस्मिथ का गलती है और डांसिंग गर्ल का नहीं, जो उसको आना जाने के लिए. देन गोल्डस्मिथ, तो किंग बोला, सो इट इज फाइनली कम आउट दैट द गोल्डस्मिथ इज द ऑफेंडर. Goldsmith did that mistake. So he was summoned to the court, called to the court, and king told him that you have make the women come and go repeatedly, and the women diverted the attention of the bricklayer, and bricklayer did not constructed the wall properly, and so the thief, his brother, died after falling that wall. So you are guilty, and finally he was ordered to be executed. But Goldsmith in a crying voice told that he is not the real offender, because it is a merchant who ordered him, Goldsmith told a merchant who ordered him to construct a jewelry in time, and that's why he showed excuses to the dancing girl. So it is the fault of that merchant who ordered him. So it is the offender is the merchant. That is what Goldsmith told. And what this merchant is none other than the father of this original house owner. His father, this is what. So finally what happened? After roundabout way, the offense returned back to the house owner whose father was guilty. He is a merchant. Listen, the story is a complicated way presented here. First, the house owner who was found offended. Then he told it is the bricklayer who constructed a wrong wall. Then bricklayer told it is the dancing girl who diverted her concentration. And dancing girl who told that Goldsmith make her move there repeatedly because he was delaying to build or create a jewelry for her. Again Goldsmith told that it is a merchant who ordered him to do jewelry immediately because in the merchant house there was a wedding ceremony. So he needed it immediately. And this is what finally this merchant, who none other than the father of the original house owner. So king found that you are the guilty because it is your father whose property and wealth inherited by you. So this is what 1, 2, 3, 4, 5 person who are involved in a single
And this is why, this is the way of justice in that kingdoms of fool. Finally what happened, ये किंग का जस्टिस सिस्टम कैसे आए, एक बेचारा मार्चेंट जो ऑर्डर दिए थे वो एक थीफ के लिए फंस गया. सो फाइनली ही ऑर्डर्ड दैट इट्स एग्जीक्यूशन विल बी डन ऑन द हाउस ओनर बिकॉज ही फादर इज नो मोर. वो उसका फादर ऑलरेडी डेथ हो गया, तो अभी उसकी प्रॉपर्टी का इनहेरिटर ये है, सो ही शुड बी punished. Next, एक stake was built. Stake, do you know stake इसमें हड़ी काट बोलते हैं, जिसमें उसको झूला राख की मुंडी को राख के काटा जाता है. दैट इज एग्जीक्यूशन. उसको बॉडी बिहेडेड करने के लिए स्टेक बनाया जाता है. लकड़ी के बनते हैं, कहीं पूजा में पर्पज में देखेंगे, जैसे काली पूजा में लाइक दैट, जहाँ पर वो बकरी बलि चढ़ाते हैं, तो इस टाइप का स्टेक में करते हैं. तो ये एक स्टेक जो बनाया वो इसके लिए बनाया गया, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको बिहेडेड करने के लिए, काटने के लिए. व्हाट हैपन, बट जब उसको लेके गया तब देखा गया कि वो बहुत छोटा हो जा रहा है, सूखा हो जा रहा है. दैट इज व्हाट ही इज थिन मोर, सो इट इज नॉट फिटिंग हियर इन द स्टेक. हाउस ओनर ये स्टेक में फिट नहीं हो रहा, तो किंग इमीडिएटली टोल्ड दैट फाइंड ए पर्सन हु विल बी फिट फॉर दैट स्टेक. So all the ministers and what king's person, they went in search of a person who will be fit enough to execute in that stake. वही स्टेक में एग्जीक्यूट करने के लिए फिट पर्सन, उन लोग मोटा लोग ढूंढ रहा था. सो they found the man who stayed there in spite of his guru's word. That man is the none other but the disciple who became fat after eating so much in a cheap cost. ज़्यादा खा के मोटा हुआ है, so they bring him to the stake. But what happened, he was crying, and during all these things his guru was watching in a visionary mission. This is what Indian way of telling story. महाभारत में भी आप इस टाइप का पाएंगे कि वो गुरु विजुअलाइज कर रहा है, क्योंकि उसको पावर, सुपर नेचुरल पावर हुआ करते हैं, और उस पावर से वो विजुअलाइज करते हैं एवरी इंसिडेंट. तो ये स्टेक, all incident was visible by him. And what happened, he guru came to them at that spot, and he told that in a whisper in the ear of disciple, whisper in the ear of disciple, उसके कान में बताया कि तुम बताओ कि ये किंगडम में गुरु पहले मैं लाया हूं, तो पहले मेरे को स्टेक में दिया जाए. This is what they started fighting with guru and disciple, started fighting with each other. Guru and disciple. Guru told that it is me who brought him here, so I must be executed first. But Guru told that, his disciple told that not, it is me who came first here with Guru, so I should be. And they started fighting, and this confused the king. What? This fight of disciple and Guru confused the king. So king asked, what happened? Why are you fighting? So why are you wanted to die? Then Guru again went to the king and again whispered in his ear, उसके कान में छुप के से बताया कि ये जो स्टेक बनाया गया है ये पूरा हेवन का लाइट से बनाया गया है. ये स्टेक में अभी तो किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, तो इस स्टेक में अगर किसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, बिहेडेड किया जाएगा, तो वो नेक्स्ट लाइफ में इस किंगडम का किंग बनेंगे, और उसके बाद जो मरेंगे वो मिनिस्टर बनेंगे. इसीलिए हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि मैं किंग बनना है और मैं मिनिस्टर. एंड दिस इज व्हाट द वाइज गुरु, the intelligent, most wise guru, he plan and something that is what to help all the citizen of the kingdom or to get out from that, get right from that tortured life of that fool kings. So what happened? Wise gurus, this trick what comes out to be a real effective. What happened कि वो जो whisper किया कान में, तब किंग टोटली कंफ्यूज हो गया कि ये स्टेक में जो पहले मरेंगे वो किंग होंगे, जो सेकंड मरेंगे मिनिस्टर होंगे, और किंग नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में भी ये किंगडम खोना नहीं चाहते थे. सो उसको पोस्टपोन कर दिया कि नेक्स्ट डे होंगे, और वो जो एग्जीक्यूशनर को ऑर्डर दे दिया कि जो पहले आएंगे उसको एग्जीक्यूट करना, सेकंड जो आएंगे उसको एग्जीक्यूट करना, और इस ऑर्डर में कोई बट नेग्लिजेंसी में नहीं उम्मीद करेंगे. ये ऑर्डर देके वहाँ पर उस दिन के लिए वो कोर्ट की इंसेशन को स्टॉप कर दिया. नेक्स्ट नाइट में गुरु एंड डिसाइपल को किंग और उसके मिनिस्टर रिलीज कर दिया सेक्रेटली.
और उसके बदले में वो दोनों घुस गए और वो दोनों को सुबह एग्जीक्यूट किया गया है लास्ट में, किंग को एंड हिज मिनिस्टर को। एंड व्हेन इन द डे दे फाउंड दैट, और उस किंगडम में क्या करते थे, डेड बॉडी को ना ब्यूरिड करे जाते हैं ना आग में दिया जाते थे, क्या करते थे, फेंक देते थे क्रो एंड वल्चर्स को खाने के लिए। तो जब किंगडम्स का सब लोग देखा तो ये किंग और मिनिस्टर का डेथ हो गया। So what happened? They called what a meeting, and they were really grief stricken, mourn for the death of the king and the minister. रात भर दिन भर उन लोग रोए। Finally जब guru and disciple decided to leave the kingdom, all the people of the kingdom come around them and asked to or decide about the king and minister of our kingdom. And so they offered the guru and the disciple to be the king and minister of their kingdom. So what happened? The guru accepted with a condition is that ki all the old laws should be removed and new rule should be implemented. So all the citizens of the kingdom agreed with them, and the guru became the king and disciple became the minister, and they make the kingdom again as usual normal. Daytime is for working time, night time is for the sleeping time, rest time, and everything. And this is a kingdom where a single rupee cannot be enough to purchase everything. एक single rupee में सब कुछ नहीं खरीद सकता है. And that is what, this is how the guru and disciple bring back the normalcy of that kingdom, and that is what the story about. And this is in Ramanujan ka most interesting story about the mythology. He is a storyteller, not only in the day to day. He was a mythological story also told by him. Mythological story, folk stories, and all that traditional Indian story. इस type का Indian story बहुत मिलेंगे. एक story, fact, and the guru visionary. All these things are imaginary, but the lesson taught by this folklore, but taught by this mythological story, is something really a real principle you will find there in the story, and that's why this story needed in our life. आपका ये स्टोरी का कहानी, इंसिडेंट, विजनरी सब फेक लगेंगे, उसको रियलिस्टिकली कोई ग्राउंड नहीं होता, बट उसमें जो लर्निंग मैसेज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट द विजडम लाइज, दैट इज व्हाट द फाइनल रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स इज नॉट द पावर बट द किंगडम, बट द विजडम, नॉलेज। ये ज्ञान दुनिया को आगे ले जाते हैं, पावर नहीं ले पाए। Even all the kingdoms, all emperor, you found a great learned teacher like Chanakya, you may know that, कि कोई भी किंगडम्स या कोई एम्पायर को आगे कंटिन्यू और पावरफुल बनाने के पीछे कोई पावर से ज़्यादा काम किया है विजडम, और विजडम कोई गुरु से मिलते हैं। तो दैट इज व्हाट अगेन ट्रेडिशनल इंडियन mythology principle you learn here. And what happened finally? They restored the normalcy in the kingdom, and this is what the summary. तो समरी को इस टाइप का आप याद रखेंगे कि गुरु एंड डिसाइपल का एंट्री इन द किंगडम, एक स्ट्रेंज सिचुएशन ऑफ द किंगडम, एंड दैट एक जस्टिस सिस्टम, कैसे हाउस ओनर से लेके डांसिंग गर्ल, देन हाउस ओनर से ब्रिकलेयर जो राजमिस्त्री था, उसके बाद डांसिंग गर्ल गोल्डस्मिथ से मार्चेंट इज द फादर ऑफ हाउस। दिस इज ए राउंड अबाउट वे जस्टिस, देयर इज नो लॉजिक एट ऑल, and where the offender is not the thief but the owner who did not do any offense. So a totally fool's kingdom was that, and how the guru saved them is really an interesting thing. So my advice is that again स्टोरी को लाइन वाइज स्टडी करिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स। ये जस्ट समरी था, इंसिडेंट का सीक्वेंस था, ये रीडिंग करने और समझने में हेल्पफुल होंगे। बट आपको जैसे व्हाट वाज द करेंसी ऑफ दैट किंगडम, डूडू, आई जस्ट टोल्ड डूडू। Why the disciple decided to stay there? For the sake of food, cheapest food. All these things must you prepare, and all these things you must get while you are truly the text line wise. You need to study line wise, and that is how the way to preparation. And any other doubts you get, please ask me in the what my personal number as well. So thank you.